Gentlemen, this episode of Men's Essentials is brought to you by TMB Basics. Go to tmbasics.com and get yourself the best fitting t-shirts, shirts, sneakers and boots for all your style and fashion needs. tmbasics.com for all your style and fashion needs. Enjoy the podcast. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're doing our thing, where the wheels won't stop turning. I know we're acting stupid, being dumb, maybe just a little bit foolish. Alright, what's up? Welcome to our very first podcast. ये हमारा दूसरा शूट हो रहा है, दूसरा टेक हो रहा है, क्योंकि पहली बार में हमारा मिक्सर फेल कर गया. वी डिडंट इवन रिकॉर्ड द डैम थिंग. इस बार वी हैव अ बैकअप. हमारा ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, सो होपफुली दिस शुड नॉट फेल. And yeah, it was good. पहला वाला take was nice, not bad, but never mind. We will again record the same thing. I'll stop making any disturbing noises. तो भाई आयुष, क्या चल रहा है, क्या हाल, कैसा लग रहा है पहला पॉडकास्ट फेल होके? फेल होके हंसी आ रहा है. मतलब एक ये चीज़ मालूम पड़ती है कि मेहनत ऐसे इन सब चीज़ के पीछे एक कैसा कि हमने 1 घंटा हुआ होगा गड़बड़, आधा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स. 45 मिनट्स हाँ शायद 1 घंटा का हो गया था कंटेंट, लेकिन अभी बट ऐसा देखते हैं सब बैक एंड में हम लोग को मालूम नहीं पड़ता. पॉडकास्ट हम लोग सुन रहे तो क्या इजी है, बट इसके पीछे मालूम पड़ता है कि क्या है. बहुत सारे जिनका शायद ऐसा होता नहीं होगा. फक अप, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस न्यू मिक्सर, तो इसलिए शायद हो रहा है. एंड इन केस आई एम चेकिंग इट. जब कोई होस्ट जब रहता है एंड देन उसका 1 आवर बाद इसलिए आयुष रिकॉर्डिंग भूल गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो, इसलिए उस सब समय बैकअप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर हमारे जैसा कांड हो जाएगा. बीच में सब जगह पे थोड़ा देखना पड़ता है. अभी टेक्निकली वी शुड इवन रन 2 more बैकअप्स जो हम कर सकते हैं. यहाँ से 2 और रिकॉर्डर पर डाल के वी कैन रिकॉर्ड टू आवर हैंडी रिकॉर्डर्स एंड स्टफ. इवन वन कैन गो इन द लैपटॉप, बट ठीक है, अभी के लिए भरोसा कर रहे हैं इस पर. शुड बी फाइन. वी शुड बी एबल टू रिकॉर्ड दिस ऑडियो नाइस एंड क्लियर. एनीवे, तो भाई क्या चल रहा है? और कुछ खाना वाना खाना हो गया आपका? आपको मैं बोला था लंच करके आने को. होप यू आर नॉट हंग्री नाउ. नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं है. Okay, so Ayush has written, I have asked him to write a few questions, 6-7 questions. उसमें से maybe we can, अभी सारे के सारे questions are very off topic, मतलब they are not related at all. Shuffled एकदम. हाँ, तो few of them are entrepreneurial questions, few of them are personal life questions. So we'll start with the social personal questions that you have. We can probably start with that. और आपका मैं ये बताना पड़ेगा कि भाई what do you want us to do this podcast in? अंग्रेजी, हिंदी या मिक्स ऐसे जैसा, तो फिर you have to let us know. आवाज़ आएगा उसका. सो यू हैव टू लेट अस नो कि भाई कमेंट करके मायंक डू दिस इन इंग्लिश और लेट्स डू इट इन हिंदी, और कीप इट लाइक हाउ यू आर डूइंग इट नाउ, देन वी विल कीप इट हाउ एवर यू वांट इट टू बी. अगर आपका इसका ऑडियो फॉर्म सुनना है तो प्रोबेबली स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट में इट विल बी लाइव सुन. सो या कीप योर आईज एंड ईयर्स आउट फॉर दैट एज वेल. जिम में या फिर ड्राइव पे यू कैन लिसन टू अस टॉकिंग and probably answering your questions. If you want to cover any particular topic that you have in mind that you would want us to talk, तो भाई आयुष को DM करो, मुझे, हमें नहीं तो TMB Evolve को DM करो. We can probably check it easier there. But आयुष को DM करना है तो आयुष को email करना. आयुष का Instagram लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में. You can just ask him कि आयुष इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो फिर we can do this once a week, once a month, जब भी टाइम मिले we can make it happen for you. और एक चीज़ क्या था, हाँ, बॉस्टन शूज़ हमारे. दिस इज़ आवर सिग्नेचर ब्लैक गोडियर वेल्टेड ब्लैक डबल मंक स्ट्रैप, and that is our canvas leather sneaker. This is on sale right now. That's on sale. This is not on sale. अगर आप कॉलेज के छात्र हो तो this you can check it out. इसका आप देख सकते हैं stitch sole है ये. But this is going to last you long. This is a very well built canvas sneaker, and this is something we have made for your budget as well. इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे क्योंकि मैं शायद क्रॉप करूँगा तो वो आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा. ठीक है. Anyway, so in case you want to get either of them, you can get them at tmbasics.com. अगर ये आपको चाहिए तो आपको हमें DM करना पड़ेगा Boston Shoes में Instagram पे, so that we can add it and you can get it for yourself. The t-shirts are from TMB Basics. पोलो टी-शर्ट जल्दी आ रही है. ये हमारा पुराना स्प्रिंग 2020 का स्प्रिंग कलेक्शन है. कोविड के टाइम पे लॉन्च हुआ था ये. बिफोर कोविड जस्ट अ मंथ, नहीं 2 महीना बिफोर कोविड. कोविड के टाइम पे हम लोग का सिग्नेचर आया था. पहला सिग्नेचर डरावा सिग्नेचर, डरा एकदम सिचुएशन थॉट है. आयुष मास्क पहन, सैनिटाइज कर, ये कर, वो कर. याद है मुझे कि फ्राइडे अपना एक स्टॉक आया था सिग्नेचर का. फ्राइडे को आया था स्टॉक. वी वेंट आउट अराउंड 16-17 मार्च आई गेस इट वुड बी, और 21-22 तारीख से लॉकडाउन था. नेक्स्ट फ्राइडे को हम जाके स्टॉक लाए थे और मंडे से इट वाज लॉकडाउन, लाइक एवरीथिंग इज शट. दैट वाज क्रेजी. लकीली बच गया यार. तो फिर ऑफिस शिपिंग होने तो सामान अटक जाता हमारा में. वही तो 2-3 गोनी हमारी अटक जाती जब. बट दैट वाज गुड. तो हम टाइम पे हो गया था जब भी हुआ था. बट ऑफिस का भी वर्क में भी एक इशू था कि वो टाइम पे
एवरी अल्टरनेट डेज जाओ, ऑफिस थोड़ा कम जाया करो, या कुछ तो वो टाइम पे था जब कोविड जब स्टार्ट हो रहा था वो टाइम उसमें तो ऑफिस बंद ही था शायद, ऑफिस में लॉकडाउन में तो बंद किया था। हाँ, लॉकडाउन के जस्ट थोड़े पहले कि थोड़ा अनाउंसमेंट आते जाते कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज मत करो, ऑटो से अलग प्राइवेटली जाओ। आई थिंक यू हैड टू कम अलोन। ऑफिस में हमने सामान नहीं रखा था ना, सिग्नेचर तेरे घर पे था सीधा, बाद में सिग्नेचर घर पे आया, उसके बीच में एक दिन आके यू हैड टू कैरी ऑल ऑफ इट होम। या तो वो थोड़ा टायरिंग लगा था एक ही दिन में, थोड़ा प्रिंटर वगैरह सब लेके गया था ऑफिस से। आई रिमेंबर वी हैड अ सेम सिमिलर लाइक नॉट दिस साइज, ये तो काफ़ी बड़ा ऑफिस है क्योंकि इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ गया। हमारा पहला ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में था। ये व्यू हमारे बालकनी में था, हमारे पास ऐसा व्यू नहीं था क्योंकि वी टुक अ बालकनी बैक देन। अभी हमने थोड़ा व्यू लिया ताकि पॉडकास्ट करेंगे तो ऐसा थोड़ा अच्छा लगे। अभी अंधेरे में तो आई डोंट नो हाउ, अंधेरे एज इन ब्राइट, ये अजीब से ब्राइटनेस, आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन सी इट और नॉट, बट स्टोरीज में डालते रहता हूँ, यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड मे बी वी कैन फिगर आउट अ बेटर सेट, वी कैन पुट अप बेटर लाइट्स, साउंड प्रूफ इट बेटर, थोड़ा एको वगैरह आएगा आपको, सॉरी फॉर दैट। But yeah, with the time, with more podcasts, it should get better. Video podcast, it should get better. स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा एको आ रहा था, बट अभी हम लोग शायद ओनली 1%, 5% रिड्यूस हो गया है। डिफरेंस हम लोग को पहले मालूम 10-15% तो कम होना चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी ढक दिया है पर्दा वर्दा डाल के, बट साउंड प्रूफिंग नहीं किया। तो आई वुड वांट इट टू बी अ बिट मोर साउंड प्रूफ, तो पैनल वगैरह डालेंगे, कुछ करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पुटिंग इन द एफर्ट, बिकॉज दिस इज देयर क्वेश्चन दैट वी आर आंसरिंग। इफ अगर हमें करना है सिर्फ तो वी कैन जस्ट सिट एंड हैव अ कन्वर्सेशन, वो भी कर सकते हैं बाद में। एनीवे, तो फॉर नाउ आई थिंक वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड वी कैन सी हाउ इट गोस। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस मैंने निकाला था इसका आंसर्स मेरे को यूजुअली इंटरनेट में कोई भी पॉडकास्ट वीडियोस इजीली ज़्यादा मिलता नहीं है। मीन्स बहुत लोग ऊपर से ऐसा बोले थे, तो उसका मेरे को थोड़ा इन डेप्थ माइक सेट क्वेरी ऐसे भी आप लोगों ने ऑलरेडी बात तो हो गया है, बट फिर भी एक बार थोड़ा और इन जनरल थोड़ा और बात कर सकते हैं इसके। बात तो हो गया, जो फेल रिकॉर्डर जो हुआ नहीं। हाँ, बराबर, दैट्स ट्रू, दैट्स हाउ इट इज। सो देयर वर द टू क्वेश्चन दैट आई जस्ट वांटेड टू आस्क। कौन से दो थे? ओके, सो एक जो था मम्मास बॉय के रिगार्डिंग, जो हम लोगों ने मीन्स यूजुअली मीन्स एक यंग एज से बोला जाता है कि हम लोग हमेशा पेरेंट्स का मीन्स इट्स गुड उनको परमिशन लेके हमेशा करने का था, यंग एज, टीन एज या तो फिर 10 यंग टाइम में। बट जैसे जैसे हम लोग एल्डर बड़ा होना शुरू हो जाता है 25, 30, 35, तभी भी कोई लोग रहता है जो जैसे एक मामास बॉय का एक टैग उन लोगों को कोई लोग दिया रहता है कि ये थोड़ा इजीली खुद का डिसीजंस लेना इसको होता नहीं है इजीली। सो वो कैसा हम लोगों को एक एज के बाद हम लोग इंडिसिवनेस कैसा उस पर नहीं रहना चाहिए, हटना कैसा चाहिए उस पर उसका। But the funny part is हमें ये दूसरी बार शूट करना पड़ रहा है, so it just becomes very repetitive. But anyway, if we look at it from just awareness point of view, what do you mean by awareness? What do you mean by mama's boy? Man child या फिर mama's boy का मतलब क्या? What do you really mean, Ayush, when you say कि भाई यार ये बंदा तो mama's boy है, या फिर अगर कोई लड़की ने बोल दिया किसी लड़के को कि भाई ये तो mama's boy है, तो आर यू अ ममाज बॉय? आजकल बहुत जन तो पूछते भी है भाई टिंडर बम्बल पे, आर यू अ ममाज बॉय? इन अ लॉट ऑफ लाइक नॉट आई मीन आई हैवंट कम अक्रॉस एन एक्सपीरियंस, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ women asking it to few of the matches they have seen कि he looked like a mama's boy, so I had to ask him, or whatever the kind of conversation they were asking, so they were having, so she had to ask him or they had to ask them, the men, आर यू ममा's boy? बंदियों के लिए उतना नहीं होता है क्योंकि बंदियों के लिए आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ सोशली एक्सेप्टेड, विच इज़ काइंड ऑफ फक्ड अप, इट इज़ फ्लॉड टू। इवन अ वुमन शुड नॉट बी वेरी इनडिसाइसिव इन हर लाइफ, बट बंदियों का थोड़ा एटलीस्ट हमारे देसी समाज में इट्स स्टिल मोर लाइक घर की बेटी है तो बस शादी तक की घर की, दिस डेट्स अ स्टूपिड फक्ड अप प्लेस एनीवेज में, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट mama's girl is not a taboo, but mama's boy is a taboo because as a man in a सोसाइटी और इन द सोशल सर्कल कुछ चीज़ें हैं जो एक मैन को करनी चाहिए, या फिर करनी मतलब शुड बी केपेबल टू डू अ सेट फ्यू थिंग्स। तो व्हाट डू यू मीन Ayush when you see someone or when you hear someone getting called mama's boy or man child? What definition does it ring to your bed? For me, I think mama's boy is someone who can't make decision for himself or who always relies on elders to make any basic decisions for themselves. And जब भी कुछ भी एकदम प्रॉब्लम हुआ जल्दी पेरेंट्स के पास जाके पूछने चला गया इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसा भी नहीं, बट एक बैकअप सेफ्टी जैसा हम लोग हमेशा समझ के रख देते हैं कि हमेशा पेरेंट्स से तो बचा लेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट एक तो कभी कभी ठीक नहीं लगता है। नहीं, वो फिर भी ठीक है, पेरेंट्स है तो इवन व्हेन यू बिकम अ पेरेंट यू विल प्रॉब्ली वांट टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, बट
गलत चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, वो मेरे को वो अलग चीज़ हो गया। अभी कि गुंडागर्दी करके आ रहा है, खून खराबा करके आ रहा है, देन व्हाई विल यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, राइट? But at the end of it, even if you're a parent and if your child does something stupid, even if he's in his 30s and if he needs help, he'll probably want to help. But वही है कि that could be the last resort, or least like the last case scenario where you really need their help, so you went out for their help. Or if you're a parent, you felt like helping and you saw them, that was the last result, so you provided the help. The problem arises when people don't want to put in the effort and they just rely on parents for their help, their assistance, their distance, everything. So from the time they wake up to the time they sleep, every decision that they make are being made by someone else. जो खाना बनेगा वही खाना है, सो के उठ गए, you didn't do your bed, you didn't take care of anything that has got to do with your life, your business, none of it. मम्मी घर पे खाना बना रही है, मम्मी आपका बेड बना रही है, मम्मी आपके कपड़ा निकाल रही है, मम्मी आपको नहला रही है, मम्मी आपको सुला रही है, मम्मी आपको घर के सारे में मम्मी, और बाहर में मतलब पापा आपको पैसे दे रहे हैं, पापा आपको घूमने ले जा रहे हैं, पापा आपको ये खरीद के दे रहे हैं, पापा ये जो भी है. इन केस ऑफ बोथ पेरेंट्स वर्किंग, दोनों इक्वली घर पे बिगाड़ रहे हैं, दोनों इक्वली घर के बाहर बिगाड़ रहे हैं. Now the problem with this is desi parents don't really know when to draw a line, especially middle class parents. वो होता है, आई थिंक यू वाज सेइंग इट द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर रिकॉर्डिंग कि माय चाइल्ड, मेरा बेटा अभी 50 साल की उम्र भी क्यों ना हो जाए. व्हाट वाज द लाइन यू सेड, क्या था? तुम 40, 45, 50 साल भी हो जाओ फिर भी मेरा बेटा ही रहोगे, कितना भी बड़ा हो जाओ बट तुम मेरा ही बेटा रहोगे. तो ये सुन के मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा दिस इज अच्छा है, बट थोड़ा दिस इज वेयर थिंग्स गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. इसका गुड साइड भी हो सकता है, मे बी शायद जॉब को गुड साइड ये है कि पेरेंट्स लव यू एंड दैट्स ग्रेट. आई मीन यू लव योर पेरेंट्स टू, बट प्रॉब्लम होता है कि जब दे थिंक कि भाई उनका वो 15 साल वाला, जब आप 15 साल के हो, आपके टीनेज वाला प्यार उनको आपके 35 साल में भी मिलेगा. यू आर अवेलेबल, यू आर फ्री. 15 साल में आप करते क्या भाई? जब तक आप ओलंपिक की तैयारी नहीं कर रहे हो, नहीं तो कोई महान काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग मच व्हेन यू आर 15 years old. So the kind of time and attention you can give to your parents is crazy high when you are 15, 16, 21, 22 years old. जब तक you are maybe in your college, if you are in the city, the same city, same college, you can still give some attention. But once you move out and start, especially after 18, 19 months, you figure out your own life, or once your life becomes your own and it's not heavily relying, and parents aren't that big a part of your life, फिर it kind of becomes difficult for a parent to ask the same thing कि और expect the same thing कि भाई मेरा बेटा तो मतलब मेरा बेटा 30 साल की उम्र जैसा एक्ट नहीं करेगा, मेरा बेटा 50 भी हो जाए, वो मुझे 15 साल जैसा ही मेरे लिए अटेंशन टाइम नहीं होता ना यार. पीपल ग्रो अप. सो दिस इज़ वेयर इंडिविजुअल्स लाइक जो 30 साल का बंदा उसको समझ होनी चाहिए, 20 साल का बंदा उसको समझ होनी चाहिए कि भाई my affection and relationship with my parents has to change and it has to evolve. I have to take responsibilities of my life, responsibilities of the decisions of my life, and I have to take the ownership of my life. I have to be responsible for myself, my finances, or whatever, my provision. My parents can't be on me, with me. I mean, देसी parent का ये भी एक कमाल चीज़ है कि they always want to be by their sons and daughters. मतलब तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं किस लिए कर रहा हूँ. That's good. That's a very comforting place to be, but this thought is not going to help you become a man or a woman of your own independent life ever, because you're always living in their own, क्या बोलते हैं, their own shade, in their own shadows कि भाई वो they'll take care of it, so मैं क्यों ही कुछ करूँगा. Then you don't really, if you are living in that bubble, then you'll never really put yourself out there to make any kind of decisions ever in your life. You will always, because your parents are providing you for everything, they are kind of breeding you into become indecisive. And most of the parents, desi parents, usually freak the fuck out when you become decisive, because the first decisions you take as a young adult is you take everything that is against them. ये पहनना नहीं, मुझे ये नहीं पहनना, ये खाना नहीं, मुझे ये नहीं खाना, ये पढ़ाई करनी, मुझे ये नहीं करनी, ये करियर नहीं, मुझे ये नहीं करना. So everything becomes kind of no. Now a lot of times, a lot of these young guys are aware. आजकल तो काफ़ी सारे people are aware. क्या कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं. आगे तो काफ़ी सारे people are aware कि भाई मुझे क्या करना, क्या नहीं करना है. बट बहुत सारे लोग बस रिबेल के लिए रिबेल करते हैं कि भाई मुझे नहीं करना, I just don't like my parents, I'll just say no to whatever they say, everything that's stupid. But this idea of my son or my daughter disagreeing to my taste or to my concepts of life has to be accepted by the parents too, and you have to find out a way to make them understand this too. आप बस ऐसे मुंह फुला के नहीं बैठ सकते, नहीं मैं नहीं खाऊंगा ये चीज़. अरे तो क्या खाओगे? क्या जो खाना वो एक बार बना के तो दिखाओ, खुद तो बना. मतलब if you want to make if you want to have a certain set of
लाइफ और यू वांट टू डू अ सर्टेन फ्यू थिंग्स, उस हिसाब से पहले खुद तो करो वो चीज़. अगर आपको सही कुछ चीज़ें खानी है तो मम्मी ये बना आज, क्यों नहीं बनाया आपने, भाई खुद बना ले एक दिन, 7 दिन खुद बना ले. देन इवेंचुअली इफ योर मम इज फ्री एंड अवेलेबल शी विल प्रॉब्ली स्टार्ट मेकिंग इट फॉर यू, बट यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस. यू टेल योर पेरेंट्स दैट मम्मी मेरा खाना मत बना, मैं बना लूंगा. एंड मेजोरिटी हम लोग जब बोलते हैं हमें ये बना के दो या वो बना के दो, मेजोरिटी टाइम्स वो जंक फूड ही रहता है. मतलब कुछ टेस्टी कुछ ऐसा, मतलब देयर इज सम डेली देसी फूड, दे विल नॉट वांट टू प्रॉब्ली ईट समथिंग और व्हाटएवर. तो ठीक है, तुम्हें नहीं खाना वो चीज़, तब इफ़ यू आर ईटिंग and following a very unhealthy lifestyle, then that's a different topic altogether. But even if you want to eat something very healthy, you know, high protein, mummy मुझे हर दिन पनीर, हर दिन चिकन चाहिए. Maybe a mom doesn't want to eat that much chicken or protein or paneer every day, but it is a very important part of your diet. I'm talking in the positive sides only. I'm not going to junk food. मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी हमारा podcast सुन रहे देख रहे, they are all conscious of making the right decisions. So let's just give them the benefit of the doubt कि हाँ भाई इनको healthy खाना खाना है हर दिन, और एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे माँ बाप मुझे हेल्दी खाना प्रोवाइड करें हर दिन. दैट्स स्टूपिड. अभी अगर आपकी उम्र कम है तो वो आपको पैसा दे सकते हैं खाना खरीदने को, एटलीस्ट खाना बनाना तो शुरू करो. लाइक इफ़ यू, अगर आपके घर में कुक है देन यू कैन प्रॉब्ली आस्क देम कि भाई मेरे लिए इतना सा आप बना सकते हो कि आप लाके उनको सामान दे दो, चीज़ें दे दो, जो भी है सब लाके कर दो. थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा जिम्मेदारी विल हेल्प यू गेन द रिस्पेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स. का चौके इसको अगर ये चाहिए तो अपना जुगाड़ कर लेता है. When your parents start saying you things like अरे अपना देख लेता है, that's actually a good thing. That's actually a thing where they kind of respect you enough to know that अच्छा he can be by themselves. So if you can give that weird sense of बड़ा dissatisfying सा comfort to your parent कि अगर मुझे हमें कुछ कल हो भी गया तो he can take care of himself, that's a very comforting place for your parents to be. उसके बाद your parents can just not worry about you and they can still love you unconditionally what it is. अगर आपकी उम्र कम है तो योर पेरेंट्स वरी अबाउट योर एग्जिस्टेंस एंड योर लाइफ अ लॉट मोर देन एनीथिंग एल्स. वो आपके सर्वाइवल के लिए, पहले तो अपने सर्वाइवल के लिए दिमाग खराब किया उन्होंने, बिकॉज वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री येट एंड वी डिडंट हैव द इकोनॉमिक फ्रीडम दैट वी हैव राइट नाउ एटलीस्ट. So they come from a place where they had to work hard to survive. Middle class parents in India, upper middle class. I'm not talking about the rich men, whatever. They had to work for their survival. Now they are trying to work and figure out life and take decisions for your survival. What's the point? Like how much will they think and do just for survival? Let them be. उन्होंने एक काम किया ना अपना, उन्होंने आपको बढ़ा के, उन्होंने आपको खिलाया पिलाया. अब आपकी दिमाग थोड़ी बहुत अवेयर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत डेवलप होनी चाहिए कि आप अपनी चीज़ें खुद से कर पाओ और उनको आपके सर्वाइवल की चिंता ना करने दो. करेक्ट. आप अपनी सर्वाइवल कर सकते हो. उन्होंने इतना प्रोवाइड कर दिया कि आप सर्वाइव कर सकते हो. उनको सर्वाइव करके तो दिखाओ कि भाई आई एम नॉट, मैं 16 साल का हूँ, मैं आज जाके नहीं कमा सकता, मुझे 11-12 की पढ़ाई करनी. इट्स वेरी, वी डोंट इवन, अब तो लोग बोलेंगे कि नहीं अमेरिका में देखो होता है, बट दे हैव द सिस्टम्स इन प्लेस. वहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी मिलती है आसानी से. वहाँ पे यू कैन बिकम अ वेटर, यू कैन बिकम अ सर्वर, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर 16-17. यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है अभी तो बन रहा है. वी आर बिकमिंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री नाउ, थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. But it hasn't been the case since our parents didn't have the option to work 16. They just wanted to study more so that they can get a better paying job when they are graduated or whatever. Anyway, so when you're 16-17, when you're in your high school or whatever, the best thing that you can do is do your own thing. Let your parents provide your money because you are not the age yet. अगर आप कॉलेज में भी हो तो you don't have to worry about the money जब तक your parents can take care of it, but don't take it for granted. That's the concern. That's the easiest thing you can do right now as a young man to become the least of a man child and instill some habits that will make you a genuine, honest, masculine man. That even though your parents paid for your fees, even though your parents are providing you for your food, you are grateful for it, you are thankful for it, and you are making sure you do take the ownership and do the right things for it. In a way that अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप उस हिसाब से अपना खाना बना के पका के खा रहे हो. उनका दिमाग नहीं खा रहे कि भाई, दिमाग ख़राब नहीं कर रहे कि भाई यही लाओ, यही बनाओ, यही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, मुँह फुला के बैठ गए. अरे भाई, यू आर एट योर एज. अगर आप 17 साल की उम्र में लड़कीबाजी कर सकते हो तो माइट एज वेल मेक सम फूड एंड ईट. जिम जा सकते हो तो खाना ही बना सकते हो. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. 2 बार हाथ जलेगा, फिर नहीं जलेगा, तो बन जाओगे आप खाना बनाना. और एल्स यू कैन आस्क योर कुक. यार अगर बहुत जन के घर में तो कुक होता ही है. इंडिया में इट्स वेरी कॉमन टू फाइंड कुक्स. ठीक है. इफ़ योर हाउस ऑलरेडी हैज़ अ कुक, यू आस्क योर कुक. इफ़ योर हाउस डज नॉट हैव अ कुक, यू आस्क योर पेरेंट्स टू टीच यू कि भाई बना दे, एक बार सिखा दो. गेट द स्टफ, आस्क देम व्हेनेवर यू आर फ्री. इफ दे टीच यू, यू लर्न एंड देन यू स्टार्ट कुकिंग बाय योरसेल्फ. दीज बेसिक थिंग्स when you do it right, when you start taking decisions for it, सुबह उठ के बिस्तर बनाना, अपना खाना बनाना.
अभी ये बेसिक का पॉइंट बोला से एक नया पॉइंट याद आया. ये बेसिक फूड जो बनाने का जो हम लोग को आदत जो हम लोग रहता है इम्पोर्टेंट है, बट हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, फ्रेंड्स जो रहता है हम लोग को ईजिली क्विक फूड किधर भी कुछ भी जंक फूड हो या तो फिर होटल का अच्छा मतलब बड़ा थाली या कुछ भी हो, वो हम लोग को आदत रहता है वो होटल का फूड या किधर भी हम लोग रह रहे तो वो खाना. आजकल आयुष बहुत बाहर का खा रहा है मतलब. आजकल मतलब ये पहले का भी का नहीं है. जब भी बाहर का हम लोग जब पहले बहुत ज़्यादा खाते थे एंड देन हम लोग जब स्विच हो जाएगा घर का खाने के लिए तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही फील होता था कि मीन्स इसका प्रॉब्लम क्या होता था कॉलेज डेज में ये ज़्यादा होता था कि टेस्ट हम लोग को फिर वो घर का इजीली मिलता नहीं. अगर सिंपल एग्जांपल मैगी अगर कोई ज़्यादा खा लो, वड़ा पाव ज़्यादा खा लो, या बाहर का जो फूड जब ज़्यादा खाना चालू करता है ना फिर हम लोग को घर का ना फ्रेंड्स कम हो जाते हैं. So, इसका मेरे को सोल्यूशन क्या लगा था, मैं कंप्लीटली कट डाउन ही करता था. चाहिए ही नहीं, मतलब चाहिए नहीं, अब देखने का भी नहीं है. तो उसके वजह से मेरा ऑटोमेटिक टेस्ट शायद धीरे धीरे करके डाउन होके मीन्स मेरे को पसंद आने लगता है. घर का शायद मे भी सॉल्ट कम हो सकता है या मे भी कुछ मसाला कम हो, बट बाहर का सेम है. मीन्स बाहर का असली में अच्छा नहीं रहता हेल्थ के लिए. फ्राइड ज़्यादा रहेगा तो वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देता है. सो मीन्स वही सोचते हैं कि घर का इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि घर का खाना ही बंद करो करके, बट घर पेरेंट्स बोल रहे हैं ऐसे कोई रीज़न नहीं है, फोर्स कर रहे हैं जो भी है. मोस्टली इट्स डूड आई मीन हेल्थ एंड फिटनेस. आई डोंट नो हाउ सिंपल इज इट. आई नो हैव क्या बोल रहा था. सो वही मीन्स अगर ऐसा रहेगा कोई लोगों को प्रॉब्लम कि बाहर का खाने का आदत ज़्यादा हो जाता है, फिर घर का पसंद नहीं आता धीरे धीरे करके, तो वो आदत कैसे हम लोग को रिवर्ट बैक करे कि घर का हेल्दी फूड है इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को उस पर ही रिवर्ट बैक कैसा करना चाहिए. यार घर के if you know how to cook your basic house meals good, you can make it tasty. Not as tasty as the junk food obviously because you're not using उतना मसाला, उतना तेल, उतना डीप फ्राई, उतना हरी मिर्च ग्रीन लाल मिर्च नहीं डाल रहे हो तो it will just not taste a certain way. But things that taste that good are not always healthy. अभी that's your probable choice you have to make. आपको सेहत बनानी है कि आपको ज़मान चाहिए. इसका साइड इफेक्ट्स जब वर्कआउट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तब मालूम पड़ती कि हाँ इतना सब में जो खाना खाया इसका ही साइड इफेक्ट है. यू डू अ थिंग ना, एक दिन आप जंक आई जस्ट द बेस्ट वे टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इट. लाइक देयर इज दिस थिंग ना, आई थिंक सदगुरु का कोई किताब था इनर इंजीनियरिंग, उसमें उसने सही चीज़ लिखी थी. बड़ी सिंपल सी लॉजिक थी. हाउ मच टाइम डज योर बॉडी ओके जस्ट अकॉर्डिंग द ऑडियो, द अमाउंट ऑफ टाइम योर बॉडी टेक्स टू डाइजेस्ट द फूड differentiates how healthy and functioning your life and your fitness is going to be. अगर आपका खाना आपके शरीर में पचने को 12 घंटा 50 घंटा लगा रहा है, then probably your food is just making you a lot more lethargic and a lot more exhausting. Your body is using a lot more energy to just consume your food than to give you the energy to do something else in your life. एक दिन सिर्फ जंक फूड खाओ, ठीक है. सुबह खाना चालू करो 6 बजे से शाम के 6 बजे तक सिर्फ जंक फूड खाओ. ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपका जंक फूड शाम के 7 बजे तक, और 9 बजे 8 बजे भागने जाओ, ठीक है. गो आउट फॉर अ रन, गो आउट फॉर अ रेगुलर जॉग. शायद आपको 1 किलोमीटर भागना है, उसमें से 100 मीटर के एक स्प्रिंट मारो, ठीक है. व्हेन यू रन दैट 100 मीटर स्प्रिंट फुल गो क्रेजी स्टूपिड फकिंग क्रेजी स्प्रिंट विद दैट 100 मीटर्स, you will shit your pants. You will actually वो सारा खाना निकल आएगा मतलब I don't think you will puke, but you will feel the burning in your throat, your stomach, your everywhere, your intestine. You will probably feel every bit of the junk food that you have eaten. Sprint I think comparatively सबके लिए easy है. 100 मीटर छोटा है, 400 मीटर या 800 मीटर. नहीं 100 मीटर पूरे 100 मीटर छोटा नहीं है भाई. 100 मीटर मैं बोल रहा हूँ पूरा स्प्रिंट करो ना, मतलब बिग और यूसेन बोल्ट रन एट 11 सेकंड में भागना है 100 मीटर. ऐसा हो रहा है कि 20 सेकंड में भागना है. मजाक में नहीं लेना 100 मीटर को. 100 मीटर को डू अ फुल ब्लडी स्प्रिंट ऑफ 100 मीटर्स. Everything will get out. 100 meters is the best way to test your physical standards where you are at. 100 meters and 400 meters. Just the run. 100 meter is good because it's easy and people take it for granted. They think it's easy. But if I make you or if I make anyone just go full ham at 100 meters, आपकी क्या fitness level it will come out. The amount of panting or the amount of you'll probably lie down on the floor. आप लेट जाओगे ज़मीन पे मैदान पे कि भाई नहीं हो पा रहा मुझसे, उठ नहीं पाऊंगा, मुझे सांस नहीं फूल रही, कुछ भी. 100 मीटर थोड़ा genuine sprint. And then the next day you eat clean and then you probably run in the next morning on that night. You'll see the difference. इतना fast नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा शायद. नहीं. I'm not saying एक दिन पहले. I'm not saying you'll be able to run faster or better. You will not feel the acidity and the weird fucking bloatness that your stomach feels when it has so much of crappy food to digest. When the food is simple, when the food is clean, I'm not saying you'll become Usain Bolt, but will you be exhausted? Yes, but you will be exhausted on your cardiovascular level.
But when you're in your junk and your weird crappy food, you'll be exhausted on all levels. Like you'll be feeling the burning in your stomach, in your intestine, not just in your lungs. When those two things are sorted, you'll probably feel the burnout in your lungs because you're not capable yet. You're not trained enough for it yet. That's the difference. That's the different part. That's where we can train ourselves. But if the body is shitting and aching all over, then how the fuck? Then needs to fix that. We need to fix that. We need to be working on that first. But this is only for people who genuinely care about their fitness though. अगर आपको अपने शरीर के बारे में घंटा ही कुछ फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप खाओ जो खा रहे हो, फिर अभी खाओ, अभी कुछ नहीं पता चलेगा 18, 20, 19, 22. As soon as you get to 24, 25 years, especially if you get to 22, 23, शरीर में दिखना शुरू हो जाएगा. You'll start storing fat. You'll be a skinny, slim fit guy when you are 18, 19. जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अगर आपका लाइफस्टाइल वही रहा तो you'll start becoming fatter, weirder, skinny fat हो जाओगे, नहीं तो बस प्योर मोटे हो जाओगे. बॉडी कुछ नहीं बनने वाली. पीपल से दैट जंक फूड खा के जिम जाओगे बॉडी बन जाएगी. कोशिश करो. मुझे अभी भी याद है, मेरे जब कॉलेज डेज में सेकेंड ईयर पे था, एक टीचर था, शायद आई थिंक शी वाज 29, 30 या 32 एज के इसमें थी, एंड बोल रही थी देखो मैं मैगी खा रही हूँ, मुझे देखो अभी तक से कुछ नहीं हुआ है. एंड मैं सोच रहा इसको मीन्स टीचर कहने के लायक बोल सकते हैं कि नहीं. अभी हम लोग को इतना एक टीचर है करके रेस्पेक्ट देना चाहिए. हम लोग से एज में बड़ी है, हम लोग को रेस्पेक्ट देना चाहिए. बट ये अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा रही है? मीन्स ये एग्जाम्पल तुम लोग दे रहे हो बैठ के. मीन्स मुझे देखो, तुम्हें अभी रिजल्ट नहीं मालूम पड़ना है ना, बट इतना मीन्स क्विक रिजल्ट नहीं बोल रहा, बट एटलीस्ट आफ्टर 10-15 years इन लोगों को तो रिजल्ट. क्या पढ़ाती थी? मैगी बनाना सिखाती? नहीं, मतलब सब्जेक्ट तो कुछ और ही है. मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट आता है ऐसे ही रैंडमली बात? मीन्स एग्जाम्पल बताते शायद फूड के रिगार्डिंग, फिटनेस के रिगार्डिंग, शायद फूड के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग शायद कुछ टॉपिक था, एंड देन न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग शायद बात हुआ रहेगा. वो याद नहीं था मुझे एग्जैक्टली. बट ये मैगी का पॉइंट जो बोला ना यार, उसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी भी मैगी खाती हूँ एंड मुझे देखो अभी भी कुछ नहीं हुआ है. वंस इन अ वाइल, लाइक नॉट लाइक. नहीं, थोड़ा रेगुलर ही थी शायद. वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही बता रही थी. मतलब शी वुडंट हैव ईटन मैगी 5 times a day as a meal, right? Maybe evening snack or whatever. Controlled moderation still fine. Maybe if you're that's what she would have meant. Ki, I don't know what did she mean, but why am I defending her? I don't know, because it's easier for us to take people out of context. But if she would have been living on Maggi, good luck. I don't know if she is doing fine now or not. क्योंकि that's not a very healthy food. Any packaged food, यार packaged food से तो अच्छा फिर भी आप बाहर का समोसा खा लो, to be very honest. In that context, if you want to eat something stored packet, उससे अच्छा कुछ गर्म खा लो. But that's, fitness is a different topic, food is a different topic. But where we were at is building, not being a mama's boy and not being a man child and becoming a man of your own. Have values of your own. Basic चीज़ यार, ये सब करनी है आपको. अगर आपको फिटनेस पे ध्यान देना है, मेरे हिसाब से खाना चाहिए, तो भाई you'll have to do it for you. कोई नहीं करने वाला, बैठे रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं, फिर टैंट्रम छोड़ोगे पेरेंट्स के ऊपर. ये क्यों नहीं बना? मैं करता था, इसलिए बोलता हूँ आई हैव लिव्ड दैट लाइफ. ये क्यों नहीं, ये नहीं खाना, ये क्यों खाना? अरे तो ठीक है, बनाना है आपको, जो खाना है खा कर मेक इट फॉर यू. गेट द स्टफ, कुक इट, नोबडी स्टॉपिंग. पेरेंट्स विल गिव यू द मनी. ये लो भाई पैसा लेके आ, चिकन खाना ला चिकन, कौन रोकना? But the sooner you do this, the easier it will be for you to take other responsibilities, for your finances, for you living by yourself, for you trying to choose your career path, for doing everything that there is. So for what I have noticed recently, or what I notice very often, is when we get to see these consultation guys who need image consultation. Basically, अगर आपको चाहिए image consultation, तो भाई आयुष को DM कर सकते हो, or you can send us an email at contact Men's Essentials. Send us an email, subject consultations, your image consultation, stylist, or whatever you have in your wedding needs, whatever that there is, we'll probably hook it up. We'll probably hook up a video call and do it for you. Anyway, so what I see most of these men suffer from or go through is they never really bought anything in their life. What they're wearing is what their mother, their sister, or their father, not even father, mother or sister bought them. They usually go out when they're buying stuff, and these are not young guys. They are like 25, 29, 30 years old. Surprising लगता है मुझे देख के, but they haven't bought a single shirt or t-shirt for themselves. मतलब उन्होंने अपने लिए एक अपने स्टाइल के, अपने टेस्ट के हिसाब से एक जीन्स तक नहीं खरीदी है जो उनके मम्मी और दीदी को पसंद है, वही पहन रहे हो. Is it good when you are a 15-year-old? Sure. Is it good when you are 25? I don't think so. So when you're trying to live that kind of a life where you can't even make a decision to wear a TME Basics polo or a Boston shoe, then there is a problem. There is a problem. So problem is not that you're not spending money on our brands. Problem is that you're not making decisions of your own life. Simple decisions, as simple as you trying to eat your own food, you're trying to wear something that you would probably like, and stuff of that nature. These things are small to change, but if you don't change them, it just becomes a snowball effect. Then eventually अगर आप ये डिसीजन नहीं ले रहे हो तो आप अपने लाइफ की
कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लोगे. इवेंचुअली यू नॉट इवन बी मैरिंग समवन यू प्रॉब्ली लाइक्ड और मेट. यू प्रॉब्ली जस्ट बी लाइक हाँ मम्मी बुला रही है ठीक है चलो मिल लेते हैं कर लेते हैं शादी. जो भी मम्मी बोलेगी सही बोलेगी. मम्मी नहीं भाई मम्मी को रहना तेरे को रहना लड़की के साथ. नो इट जस्ट बिकम्स दैट. Eventually it becomes that bad that you will eventually just settle down. I'm not saying there's anything bad in arranged marriages. I'll probably make a detailed video on it. I am pro arranged marriage, by the way, in case you didn't know. I am pro for it. I like the concept of it where it's a lot more simplified, sorted way where if I look at it, I'll probably look at it in a very corporate Tinder or corporate Bumble. What is it? In today's day and age, Hari.com and all these things are a much more professional and a much more clear-headed dating or relationship website. Most of the middle-class parents also are not forcing their sons and daughters to get married to the very first guy they see. They even give them options. Yeah, you'll probably not get to sleep around with them and date them and whatnot, but you'll probably get to hang out with them. How is it bad? You'll probably see around 10 people. They'll probably see around 10 people, and if you guys connect, you connect. वहाँ पे आपका social skill वगैरह आ जाता है काम पे, but that's a good place to be. But when you don't have any fucking life of your own, हाँ मम्मी ने देख दिया अच्छी है तो कर ली शादी. That's kind of stupid. That's where this thing leads to. That's how bad it can become. So yeah. अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है ऐसा कोई लोग बोलते कि मेरा मम्मी करा के दे देगी मेरा. यार ये सिस्टम तो मुझे इसलिए पसंद ही नहीं. This system makes Indian men living in India very incapable to socialize, interact, communicate, date एंड बी विथ वीमेन. इसलिए साला इतना सेक्सुअल ऑपरेशन है इस देश में. आधे जन को बात नहीं करनी इस चीज़ के बारे में, और आधे जन जो बात करना भी चाहेंगे उनके पास अजीब सा बैकअप है कि भाई वो तो मम्मी तो सॉर्ट कर ही देगी, घर वाले तो सॉर्ट कर ही देंगे. एट द एंड ऑफ इट इंडियन पेरेंट्स एंड इंडियन किड्स आर सॉर्टेड इन अ वे दैट दे थिंक अकेले तो नहीं रहूँगा, बीवी तो आ ही जाएगी, पति तो आ ही जाएगा. लाइक इंडियन इफ़ यू हैव अ डॉटर द पेरेंट विल ट्राई टू फाइंड समवन हु इज़ well read, well educated, makes a lot of money and all that. ये in the western countries or whatever वहाँ पे थोड़ा सा independent है. और ये चीज़ कि पेरेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप किससे क्या कर रहे हो. अगर आप अच्छे हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, वही किस्मत in the terms of if you can go out and talk and socialize then you can probably find a potential partner. नहीं तो you might as well die alone. यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वे कि भाई बेटी की शादी मेरी जिम्मेदारी है. That's good in a way where you limit it to only the part where you would want to be a part of the wedding, but it becomes a little too intrusive, which I don't like. But yeah, this is how bad it can lead to like this complacent behavior ki हाँ यार नौकरी तो मिल जाएगी, like that's kind of a thing. Like it's not a very proactive way of living life. Simple, very subtle thing, but this is not a very proactive way to approach life. It becomes very complacent. Like you are just letting life be. What the fuck? Why would you let life be? Life is just happening. Take charge of it. Make it happen the way you want. टेक चार्ज बोलते तो मतलब कैसा हो जाएगा? टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. टेक चार्ज एज इन टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ आई वांट टू वेयर दिस स्टाइल प्रॉब्ली. इफ आई डोंट लुक गुड इन दिस आउटफिट, सो आई प्रॉब्ली वुड टेक चार्ज एंड लर्न मोर अबाउट स्टाइल एंड फैशन. और मुझे वो चीज़ खरीदनी चाहिए, वो चीज़ पहननी चाहिए जो शायद मुझ पर अच्छा लगे, और द थिंग्स दैट मे मेक मी लुक स्टाइलिश. Take charge in terms of image. Take charge in terms of fitness. I'm probably unhealthy, unfit. Instead of my parents telling me that I should go out and work out, I should probably get it in me. I should have the common sense to be like, what the fuck, I'm becoming a weird skinny or a weird fat weirdo. I should take care of it. Take charge in terms of women, like in terms of friends. Why would my parents at a certain point in time decide who do I want, who should I get married to? They can suggest. I'm not saying parents should not give. I don't like this Western concept where parents don't give a fuck. How stupid is that? Isliye half of these guys are not even, they don't even know who the fuck are their parents, to be honest. Many of them don't even know. Many of them aren't in good terms with them. उनको एक तमाशा मरता तो abuse बोलते हैं. हमारे घर पे आके तो abuses होते क्या यहाँ पे. We are brought up and we have grown up like that. That's good. That's sane. But the problem is intrusiveness when they invade your personal space, and it becomes they kind of make you breed into being a mama's boy or being a family boy or being a very सुशील समाजवादी लड़का and all that shit, like where you don't take any decisions, where whatever your parents say is right. They come from a different age altogether. यार इंडिया बदल रहा है, this country is developing, changing, growing. Is it becoming more Western? No, fuck no. We still have a lot of Indian values. Some people are, some sections are, but we still have a lot of global, we still have a lot of our own culture and values. You cannot say that Japan has become West. They have Western concept. Their economy is West. But they're still very East in their own way. Vietnam is still very East in their own way. South Korea is still very East in their own way. Right? People, I mean, the whole entire bloody world wants to travel to Japan and South Korea for what? अगर वैसा होता तो वैसे में ही रहते ना.
there's a lifestyle to it. People are calmer, nicer, sweeter. We are also like that, but we have been economically fucked for a long time. But as the civilization grows of this country, at least, we'll become a lot more global. We are not becoming Western. We are becoming more global in terms of it. So the parents need to realize this part. What were you saying exactly? What was your thing? तो इधर टेक चार्ज के रिगार्डिंग बोल रहा था. Take charge in terms of friends and relationships in that context. If you want to suggest me someone, I'll love to talk to her. But if you want to force me someone, then that is you making decisions for my life. Then might as well keep me locked up in the house. फिर घर से निकलने मत दो ना मुझे. अगर आपको ही मेरे सारे डिसीजंस लेनी है तो मुझे आप क्यों चाहते हो मैं पढ़ाई करूँ, आप क्यों चाहते हो मैं घर के बाहर जाऊँ, आप क्यों चाहते हो मैं नौकरी करूँ, मैं आपके साथ ही रहता हूँ. I'll just become a part of you. So this dual standard can't work together. So I mean, Indian sons and daughters are anyway a lot more. We love our parents a lot more than what the Western world does. That is not going anywhere. That should not go anywhere too. But even they, some of them are understanding. Some of them are yet a hard way to understand that. But the sooner it gets, the better it will be. कि भाई हम अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं चीज़ें. स्पेशली अगर हमारे बच्चे बड़े हो गए, अगर 18-19 साल की उम्र हो गई उनकी, उनका दिमाग उतना शायद, I mean, उतना भी नहीं डेवलप हुआ होगा जितना होना चाहिए. बट इतना तो हो गया होगा कि वो शायद अपने छोटे छोटे डिसीजंस ले पाए अपने लाइफ में. उसको शायद किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो करियर में, तो उसको शायद वो करने देना चाहिए. ठीक है यार, हमारे पास पैसा वो नहीं तो कुछ और करा देंगे. अभी के लिए लेट हिम ट्राई डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स टू स्टडी. जरूरी थोड़ी कि यार हमारे टाइम पे खाने की कमी थी, मतलब हम हमारे आई मीन पेरेंट्स, वो चीज़ तो नहीं है ना. आई हैव मेड इनफ मनी, आई हैव सेव्ड, मैंने इतना काम किया है कि मेरा बेटा बेटी आई कैन टेक केयर ऑफ देयर फूड. सो माइट एज वेल लेट देम डू स्टडी व्हाटएवर दे वांट. मे बी ही विल डू इट बेटर. ही विल बी, बिकॉज आजकल उस समय सर्वाइवल के नाम पे लोग काम करते थे. आजकल थोड़ा प्रिविलेज आ गया. आजकल लोग मज़े के इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं. आई मीन वी वर्क, आई शुड नॉट से, बट मे बी वी वर्क मोर देन आवर पेरेंट्स डू इन टर्म्स ऑफ जस्ट वर्क. बट सिंस इट्स नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड एंड एज सर्वाइवल बेस्ड, इट डजंट लुक लाइक वी आर वर्किंग अ लॉट मोर देन आवर पेरेंट्स डू. So the approach and the context of work has also changed a lot in the years to come, and it will keep changing. Maybe our sons and daughters can be a lot more, to us, a lot more, I don't know, like we can say कि हम पता कितना काम करते थे, and they'll be like, okay, but I'm making twice the more money than you are. So technically who's working more? Twice the money मतलब inflation rate के हिसाब से बोल सकता ना हो तो. नहीं वैसा भी नहीं. Like I'm just saying in general. Okay. In general too, like यार ह्यूमन लेबर इज गेट, कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं. बट द पॉइंट इज कि फिजिकल लेबर इज गोइंग आउट ऑफ वैल्यू, राइट. अभी इंडिया एंड फ्यू ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर द ओनली कंट्रीज जहाँ पे पीपल आर स्टिल वर्किंग मैनुअली अ लॉट एंड नॉट गेटिंग पेड इनफ. इन डेवलप्ड कंट्रीज फिजिकल लेबर्स गेट पेड अ लॉट, इसलिए मशीन्स एंड ऑल दिस थिंग्स केम इन बिकॉज दे वर ईजियर, चीपर. अभी भी इवन व्हेन यू सी द मेट्रो लाइन्स एंड ऑल दिस थिंग्स बिल्ट अप, कोई इंसान तो चढ़ के नहीं बना रहा ना. देयर आर क्रेन्स एंड शिट डूइंग इट. So the more advanced and the more easier that bit will get, the lesser the importance of physical labor will become. The more intellectualized the work will be. So अगर physical, अभी work from home से हमारा physical labor जाने आने का आधे से ज़्यादा कम हो गया, right? So parents are seeing you home all the time. So when they'll be wondering, साला ये ऑफिस जाता नहीं है, ये घर से ही काम करता है, ठीक है घर से ही करता है, कभी ऑफिस निकलता नहीं है, हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाता है. Why the fuck is he getting paid? Technically he is not moving out, he is not going anywhere to do any traditional work, so technically you should not be eligible to get paid, but you are making the money. So maybe eventually in the 15-20 years down the line, going to the office itself might become dumb or numb to the majority of masses. अब हमें आना पड़ेगा, कुछ होगा. For some work we might all have an office, but going there like what we are doing, going there every day to get the job done might not be necessary. So would that mean there is no work done? No, fuck no. Work has evolved and so has people. So ownership क्या था? यही सवाल था ना. I totally forgot. Anyway, so yeah, parents need to evolve in the context of when we say कि ownership of your life. When you want to suggest your sons and daughters something, you can आप suggestion दे सकते हो. आप अपने मतलब you can have a debate. You can tell your sons and daughters कि भाई देखो मुझे लगता है ये लड़की सही है क्योंकि ये मेरे कारण है. अब तू देख ले एक बार बात करके. You see where you stand, what are your values, what are her values. I think this is what you should do as a career, as a job. I cannot force you. You see, do you have any interest? Do you want to do something else? Okay, then now you have to prove it to me. Why do you think that I should agree to it? That's a healthy debate. At least you have to fucking use you are pitching yourself, right? You're pitching your
रिलेशनशिप कि भाई मुझे इस लड़की से शादी करनी है और मुझे इस लड़की को डेट करना क्योंकि आई हैव रीजंस फॉर इट. नहीं मैं प्यार करता हूँ, डोंट गेट दैट्स स्टूपिड. लाइक यू आर बिकमिंग इलॉजिकल डम फक टू ट्राई टू विन बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू योर इमोशंस एंड शिट लाइक दैट. नो यू can't win a debate with your emotions, right? You want to sit and argue with your parents, there should be some logic to it. Tell them logically why is this girl a proper fit, why is this job a proper fit, and then you have to put it in action and show कि भाई देखो मैं 6 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हुए, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं. अगर ये फुल टाइम स्टार्ट कर दिया तो मेरा 6 महीने का 200 वीडियो था वो मेरा 400 वीडियो बना दूंगा, इतने पैसे आ जाएंगे एंड फिर आपको मेरी नौकरी की ज़रूरत नहीं, फिर इसके हिसाब से मैं ऐसा कर लूँगा. तो ये कुछ 1-2 साल के मेरे प्लान हैं और मुझे इतने पैशन है इस चीज़ के लिए, मैंने इसलिए सोचा इतना चीज़. सो योर पेरेंट्स कैन मिला ओके फेयर इनफ, दिस फकर इज लॉजिकल, माइट एज वेल डू इट. ऐसी हवा में तीर मारोगे नहीं, सब कर रहे हैं, आपको पता है कैली मिनाती कितना कमाता है, अबे तू देख अपना सिस्टम. Don't try to sell yourself. Those could be examples that you can give, but if there is no groundwork done, then why the fuck will your parents trust you? They are still in their survival mode. Don't get them wrong. If our parents aren't filthy rich, which none of our parents are, they are still in their survival mode because they have come from it. We might not be in survival mode in the coming years. Our sons and daughters might be in a much privileged place, but that's a generation to come. Not yet. So for them to make sense, we'll have to give them examples, reasons, logic to make sense. Yeah. Anyway, that's how you probably not be a mild child and not be a lot of things if you want to do Mama's something. boy. And not be a mama's boy. Start making small decisions, start having a plan for it. Don't let your parents, friends or whatever, whoever, especially for some sorts of men who really love their mom, it eventually translates to girlfriends and partners also. आज मम्मी डिसीजन ले रही है, शादी के बाद शायद बीवी लेगी या रिलेशनशिप में लड़की लेगी. मतलब they will not lead but they'll just make decisions. So अभी society has put social dynamics में बहुत सारे terms भी है, beta male, hathi male. I don't like that all. I just that kind of stupid way to differentiate people. I don't like it much. But I'm not saying you have to be the alpha leader or whatever in a relationship. Don't be a leader, but just don't be an indecisive fuck. There are a few decisions you don't want to make in life maybe. आपको शायद नहीं फ़र्क पड़ता खाने में क्या बन रहा है, तो चुपचाप खाओ. Then don't complain about मुझे ये खाना है. If you are very chill with that if you are very chill like that with your things that you are not giving two flying fucks about, then be whatever. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, बनाओ जो बनाना है. अगर आपको सारी में से फ़र्क नहीं पड़ता, fine, fair enough. Don't care. But if you have some problems with it, or if you don't like it, or if you want it a certain way, you can't expect. You have to take ownership for it. अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं है तो आपको खुद सुधारनी पड़ेगी. कोई आके if you expect your parents to make it happen for you, no, not going to happen. The more you rely on it, the more indecisive you get in your life. अंग्रेजी में ही हो गया, हिंदी तो बोला नहीं, but ठीक है. That's what it is. अब बोलो दूसरा सवाल क्या था? Next. इससे रिलेटेड कुछ था और कोई सवाल वगैरह? Was it clear? ये तो क्लियर हो गया, था. दूसरा तो अभी सेपरेट टॉपिक हो गया. दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो किसके रिगार्डिंग था? एक कॉन्सेप्ट किसका था? एक तो पर्सनालिटीज के रिगार्डिंग था, राइट? मास्क के रिगार्डिंग जो मयंक ने पहले एक वीडियो में मयंक बोल रहे थे हम लोग का पर्सनालिटी में हमेशा एक वर्क रिलेटेड एक मास्क रहता है, एंड देन वर्क कभी जो काम कर रहे हैं उसके बाद हम लोग जब भी वर्कआउट कर रहे हैं जिम में रहता है तभी हम लोग एक मास्क उतार के सेकंड मास्क में रहता है. एंड देन अगर वर्कआउट के बाद हम लोग जब वो मास्क के बाद जब घर पे आते हैं तो उसके बाद हम लोग सेपरेट मास्क पहनते हैं. सो वो एक कॉन्सेप्ट, एंड देन मतलब मास्क वाला एक कॉन्सेप्ट हम लोग का पर्सनैलिटी का अलग अलग मास्क से रहता है वो. एंड देन सेकंड ऑथेंटिसिटी. ये दोनों में थोड़ा हाँ मतलब ये क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब साला मास्क पहने कि ऑथेंटिक नहीं करे तो क्या करे. थोड़ा ये डाउट जैसा हो जाता है. यू शुड बी ऑथेंटिक, वो भी करेक्ट है. मास्क वाला एक पर्सन ह्यूमन बीइंग के पास बहुत मास्क रहता है, वो भी करेक्ट लगता है. सो कंफ्यूजिंग जैसा लगता है कि ये सुनना किसका चाहिए, या तो फिर how do I say it without making a lot of these apparent intellectuals triggered. I'm not saying multiple personality disorder is what I mean when I say that आज दुखी हो, मैं बाइपोलर की बात नहीं कर रहा, अभी दुखी है कल खुश होकर नाच रहा है. That's not what I mean. I mean you can, every human being if raised right in proper social conducive environments can interact, be and engage with different kinds of people, have different situations thrown at them and can deal with them, like have
can deal with them and life, because life is just a series of stupid, unconclusive events, and you have to make your conclusive sense out of it. It depends on how you're raised though, because a lot of parents are pro making you having multiple personalities in a way that you can interact with more people, you can have multiple friends, you can probably be friend with a CEO, or you can probably be friend someone else who's not as important, or maybe just as simple as probably the receptionist at your gym or whatever. So the skill to, not the skill, the social understanding to have, the social understanding to communicate with different types, different forms of people, and even the idea of you don't, how do I say it in a more logical way? The social understanding to be with more different types of people, and the idea of you don't really need to be with people too, like you being by yourself too. This is something that, for example, when you're studying, a lot of people are great at group studies, a lot of people are great at studying by themselves. So does it mean that a certain type of guys are meant to study with groups? No, because they have studied like that throughout. So that has become very conclusive. That has become a very identical part of their study pattern or whatever. A lot of people who have studied by themselves, they'll want to study by themselves, irrespective of them being very social creatures, whatever. So I feel personality is just a very essential tool in a way. I see things, because I'm an image consultant, I see things as a very goal-oriented process of getting stuff done easily, as easy as it could be. Personalities to me, if I get more detailed about it and if I try to talk more sense out of it, then it will not really serve us any purpose in getting better or solving issues at hand. But if we look at it from a more problem-solving place, we can probably say that if you have the capabilities, or if you try to instill those capabilities, which will probably make you have different sides of you. I mean, we all have our different sides. It's not that you don't like to go out and party. You have not gone out and partied. So when you probably will go out and do it for a month or week, and when you see the good sides of it, or when you see the reason why you probably like it, many people like to go out for different reasons. Many people go out to party for different reasons. Many people go out to just meet people there. Many people go out just to dance there. Many people go out just to have a drink there. Many people go out just to meet friends there. Many people go out just to get a break from their regular life. Many people just go out because they didn't see any place else open. There are thousands of reasons. But once you find your reason, and now once you are very authentic to your reason, that why you are out and what is it that you are out, it is not that difficult for you to be in very different forms of your personalities which you thought didn't exist. Is it making sense? Are you getting any, which part of it? Because I'm not trying to, I have to keep it simple, so I don't know how would I keep it simple. So I'm just trying to ask you, is it making sense? Which part of it isn't? Sense means in the sense, कैसा बोलेगा आप? It's not conflicting जैसा वो solution उसका नहीं मिल पा रहा है. It's okay. Both are different जैसा. Like conflicting मतलब okay, what is the conflict currently then? What do you वापस से बोल then? What was the part that conflicted you the most with authenticity and personality? See, because authenticity to me comes a lot more of values. It comes a lot more from values and the identity that you have as a normal human being or as a man. Your identity of the characters you have built, the value systems you believe in, the morals, ethics, the way of life you have. None of these identity-based things has got anything to do with your personality. If you are an ass, you will be an introverted ass, or you'll be an extroverted ass, or you'll be an ambivert ass, but you'll be an asshole. So it doesn't really matter whether you are trying to be the people's person or you're trying to be a man of yourself. So conflicting identities with personalities makes it weird. Like if I am in a social situation, how can I, okay, let's say I am quote unquote introverted, and if I'm in a social situation, I should be true to myself and stay introverted, which means I'll just be in a corner and be in my head and just chill and not give any flying fucks about socializing and talking or doing anything in that sense, because I'm being true to myself. How fair is it? It's kind of stupid. It's kind of very dumb in a way that भाई तो आया क्यों घर के बाहर, फिर घर में ही रहे. फिर in that case, if you are in a social situation and if you are in a social situation and if you would want
to interact with someone, but you are not because you think it is against my personality, then there is a problem. Obviously, if you are in a social situation or not in a social situation in a way that when you're out meeting people and you're not meeting people because you're an introvert, then what the fuck, why did you even step out to meet people? But if you're just out listening to music or whatever, then yeah, you can be on your own zone, do whatever you want. That's a different reason. But if the reason is socializing, but you feel like you should not be socializing because you're an introverted man and that will be manipulative, then it's not. Manipulation would be when you're trying to do something that you are not. When you're trying to impress someone when you're not. You are saying this in the beginning कि भाई जब हम लोगों से मिलते हैं, strangers से मिलते हैं, तो we are not the same as we are when we are meeting our old friends. Yes. Our family members. Vulnerability. Basically, people are very scared to express their honest feelings. People are very insecure about their own selves. People have anxieties. People aren't free to express who they are, be them and be who they are. They have, वो अपने आप को इतना जज करते हैं, वो situations को इतना जज करते हैं, और वो बस वो they don't want the other stranger. ये human trait है. This is maybe the societal human trait that we have. कुत्ते बिल्ली में नहीं है ये चीज़, इंसान में, क्योंकि हमें कॉन्शियस है, हम चाहते हैं कि हमारे सामने वाला हमारा कोई बुरा इंप्रेशन ना ले रहा है. एग्री करें. Right. When you are an introverted shy guy, that's an approach. When you are an introverted shy guy and you went out to talk to a girl and you're trying to be this super extrovert, hey, what's up, girl? Like, you're trying to do something that is totally not fucking you. It's just not your energy. It's just not your vibe. Instead of you just walking up and, excuse me, hi, I like your style, what's your name? Oh, stuff like that. Anything that you would do being an introvert and you're not scared of. Instead of that, if I made you do something super extroverted, there is a process to it. It's called exposure therapy. A part of it is you just taking things so high that your normal looks very easy. But there is a place and time for it. It has to be done right. I just can't tell anyone to do it because they don't know how to calibrate that right. But if you trying to do something so crazy that you have not, then you are being inauthentic in a way that you are not being you. You are an introvert, we are trying to act extrovert. But if you are an extroverted guy and you're trying to just be by yourself in your zone, trying to be introverted, it will be a nightmarish of a thing for you. So don't try to manipulate and don't try to fake shit out just because you want approval and praises from people, right? This arises when you want to impress everyone you meet. Yeah, there will be someone who will just not be into you. Not even as a romantic interest, but just as a friend. There will be someone who will just not want to be your friend. You have to accept it. There will be someone who will just not want to be my friend because of my lifestyle, my ideas, whatever the fuck it could be, but there will be someone who will just not be into me. So as long as you genuinely do not care about everyone's approval, you will start becoming more and more of you with everyone you meet, with most of the people, whoever you meet. I am an introvert, but people find it difficult for them to believe I'm an introvert because they feel, but you have social skills. What has social skills got to do with introverted nature? I recharge on my own, I be myself, but when I'm in a social place, I'll want to fucking talk to people. Even though it's very anxious to me, even though I don't feel the need of it, even though I'll not willingly choose to go out and talk to people. If I see someone interesting, I'll probably not want to push myself, I want to know them. अभी तक उतना हुआ नहीं हूँ मैं balanced or extroverted in a way. But I'll force myself कि शायद I should, because this is how I'll probably get saner and balanced in my life. If I see someone interesting, if I see something interesting, I should probably go and ask and inquire and become a bit more curious about life, become a bit more curious about things. बहुत सही एग्जाम्पल है, when you see रोड पे दंगे होते हैं ना, जब रोड वगैरह किसी को मार रहा है, पीट रहा है, कोई गाली दे रहा है, so if there is an extrovert around, he'll want to be a part of it. क्या हो रहा है? If there's an introvert, fuck it, don't care, he'll move on, right? So you'll see the difference in them. Like, there are a lot of people who are very curious, they will stand and see क्या हो रहा है यहाँ पे. So just they are the kind of people, they want to be a part of it. They just, they're in them. I'm not telling you to become a part of a road rage, but I'm just telling you to become a bit more curious. If you're an introverted guy and if you're an extroverted man or a woman, try to be by yourself. Try to learn the skill of not having the social approval all the time and not have those insecurities come from the lack of social approval all the time. Introverts are insecure of themselves in terms of them not being able to do a set few things, and their goals are very me related. Extroverts insecurities and goals are very the approval related, the society's approval related. Extroverts, I mean, the reason why an introvert would blame them would be, yaar, I am not doing this properly, matlab I should work harder, I should push harder, I should put in more effort. That's their sort of insecurity or that sense of problem. Again, to what I have noticed, this is not a fucking theory, I'm not in a book on it, but to what I have seen extroverted crib about is, I'm not getting the approval, I'm not getting the attention, I'm not getting the social validation that I should, because they crave on that, and that is the recharge.
and our self-worth is it's a different kind of a recharge that we have. If we can find a balance, then we'll be able to be by ourselves, and we'll also be able to be around great fucking people and have a balanced approach to life. Identity is different, your values are different, personalities, I think everyone has multiples of it, and we should have a balance of all. We should be able to go out and talk, we should be able to be by ourselves, we should be able to do life as it was supposed to be, and we should be able to erase how we have lived it thus far, or the sets of rules that we have built for us thus far. अब थर्ड इससे रिलेटेड ये मीन्स बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट आते हैं इसके रिगार्डिंग, मीन्स रील्स आता है, पोस्ट आता है, तो ये क्या ठीक लगता है कि बहुत ऐसा पढ़ो क्या बोल रहा पढ़ो. ठीक है, अभी हम लोग को रील्स में देखो या तो फिर कुछ भी पोस्ट हो गया, ऐसा सब जगह पे बहुत दिखता है हम लोग को, कुछ भी फ्रेंड से रिलेटेड, सक्सेस बहुत काम से रिलेटेड हो गया है, तो फिर ऐसे एक पोस्ट बहुत दिखता है कभी ना कभी. सेम नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है कि अगर तुम्हारा ये एज ग्रुप मीन्स 18 to 20, 25 to 30, इसमें लिखा है if you are 25 to 30 and your main circle isn't frequently discussing about क्या है stocks, real estate या opening business, community relationship, fitness, and instead you are discussing, your friend circle are discussing about getting drunk, one night stand, the good old days, then it's time to elevate your circle. यार ये तो यही हो गया ना कि तो तुम ऐसा बहुत दिखता है. This is a very fucking politically correct post, which is more like, if you are 25 to 30 and your friends aren't if you are 25 to 30 and your friends aren't drinking water, then it's about time to elevate your circle. And if you are 25 to 30 and your main circle isn't frequently drinking water, and instead your friends are drinking beer and whiskey all the time, it's about time to elevate your circle. Isn't that fucking obvious? Like, why would you want to over exaggerate a few things which are so common and out there? I mean, I get it. I get the importance of the whole idea of talking success and getting people more hyped about success, because at least in this country, I'm not talking, this is not healthy for the Western world, to be honest. ये अमेरिका वालों का ही है काम. ये उनके लिए नहीं, क्योंकि उनके पास भुखमरी की कमी नहीं है. ठीक है, they are already very sorted financially. They need to find balance. They are fucking losing their mind over this. They are losing their mind over lack of balance. इसलिए they are destroying the fucking planet. In terms of the chase that they have, the obsession that they have with their weird fucking obsessive lifestyle. Like, ज़रूरत भी नहीं है फालतू lifestyle. But this is just a very obsessive text in terms of West. This is a good post in terms of desi fuckers, because most of these Indian population, at least till our time, were lazy, complacent assholes. At least this will kick their asses to not be a lazy, complacent asshole. As long as you are not a lazy, complacent asshole, you'll probably be talking about stocks. You'll not probably talk about real estate and shit. This is a very, very developed country ka post. You know, stocks, real estate. मतलब जिंदगी और कुछ है ही नहीं. This is stupid. But I get it where it is coming from, in a very complacent and a very lazy country like ours. यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे देश में ये प्रॉब्लम है कि लोगों को बात समझ नहीं आती, सुनते नहीं है लोग, और बहुत ही बहुत ही नालायक निठल्ले टाइप लोग हैं, जिनको यार वर्क एथिक नाम की चीज़ नहीं, जिनको करोड़पति बनना है फ्री में. लाइक कुछ आसान सा काम बोल दो मयंक, जिससे मैं बहुत सारा पैसे कमा पाऊँ बिना मेहनत के. ये जो लॉजिक, ये जो लथार्जी एंड क्या बोलते हैं उसको, 2 नंबर पैसा कमाने का जो शौक है ना भाई इस देश के लोगों को. लाइक द होल आइडिया ऑफ व्हाई डू यू थिंक देयर वर सो मेनी स्कैम्स एंड देयर वर सो मेनी फकिंग फ्रॉड्स एंड ऑल दैट शिट. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्कैम्स. वो तो पीपल स्टिल पुट इन एफर्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द होल डिफरेंट साइड्स ऑफ पॉलिटिकल स्कैम, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ स्मॉल स्केल bribery scams. Why? Because they all want to make quick money in lesser time. At the end of it, that's the core value of making quicker money in lesser time. That needs to go. These kind of posts where it's about hustle, hard work, stocks, this at least eliminates that. I would have gotten pissed at it a few months back, because I would think that this is very toxic, but I would say piss हुए थे इसके regarding. हाँ, because almost similar. Because I have watched Western media forever since I started consuming content. मैंने बस वेस्ट ही देखा ही है, और मैंने उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी भी है. तो since I have lived a certain set of life, since we have lived a certain set of life, now we have an office, we have a few things, we have got our shit in place together. Not in a very over exaggerated way. हम कोई Lamborghini Ferrari नहीं चला रहे, but we are not dying hungry in that context. We have at least got some of it sorted, because I have watched the West a lot, so I have got that work ethic part and all of that thing maybe a bit more sorted. ये उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जो साले कामचोर
2 नंबर का पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको बस क्विक मनी, क्विक ग्रैब होता है ना, इजी मनी इजी आउट, उससे अच्छा ही है. लेकिन क्या ये सबसे अच्छा चीज़ नहीं? आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस इज़ अ हेल्दी वे टू लिव लाइफ, दिस इज़ अ वेरी हेल्दी पोस्ट टू सी और गेट मोटिवेटेड फ्रॉम, बट दिस इज़ वेरी नीडेड फॉर द लेजी फक्स ऑफ दिस कंट्री एटलीस्ट, क्योंकि इस देश के लोग बड़े कामचोर हैं. हमने एक्सपीरियंस किया हमारे 3 वेंडरों के साथ, हमने देखा वो तो बिजनेस में यार, देयर फकिंग जॉब इज टू बी इन बिजनेस. द लीस्ट यू कैन डू इज बिकम अ कामचोर इन योर फकिंग जॉब, एंड दे हैव बिकम कामचोर इन देयर जॉब. सो दैट्स द रियलिटी ऑफ इट. That's the reality of the country that we're living in. I love my country and a lot of things, but this attitude needs to go from it. तुम्हें जो करना है करो, but this attitude has to go. The quick money grab and the complacent, lazy ass fucking behavior. Professionalism है ही नहीं. जो भी है वो corporate world में, and corporate world is not that big yet. Most of them are still small business owners and all that. Small business को promote करो पहले okay, no abuses. पहले थोड़ी work ethic और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लाओ, थोड़ी इंटीग्रिटी तो लाओ अपने आप में. सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ आजकल, जो 18 साल के लौंडे बोलते हैं मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मयंक बोलो. अबे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इंसान तो पहले बी अ मैन फर्स्ट, बी अ मैन ऑफ वैल्यूज़. पहले थोड़ा वर्क एथिक सीखो, थोड़ा अपने जो बोलते हो अपने शब्दों का सम्मान करना सीखो. लाइक हैव बिकम अ मैन ऑफ योर वर्ड्स, बिकम अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, बिकम अ मैन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हैव योर ओन वर्क एथिक इन प्लेस. Once all your basic requirements are sorted, maybe go get a corporate job. Once when these things are sorted, once you are a man of a set values that can probably run a business, then you run a business, then you start a business, then you'll not be asking me questions. ये जो अधिकतर यंग लोगों के पूछते जो कमेंट आते हैं हमारे 18-20 साल वाले कि मैं जल्दी बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, you will not be asking these questions if you are a good businessman. अगर आपको यार हमारे साथ 5 हैं ब्रांड्स अभी हमारे और 2 ब्रांड आ रहे हैं दिस साल. वी हैव गॉट द हेयर प्रोडक्ट कमिंग इन एंड वी हैव गॉट इवॉल्व कमिंग बैक ऑनलाइन. वी हैव अ बॉस्टन, वी हैव अ बेसिक्स, वी हैव दिस, वी हैव आवर हिंदी इंग्लिश चैनल्स, देन वी हैव आवर इवॉल्व, वी हैव अ कंसल्टेशंस. वी हैव गॉट 2 न्यू ब्रांड्स कमिंग इन. हम क्या गूगल करते हैं क्या हाउ टू स्टार्ट अ वर्किंग ब्रांड? We are not talking about us only. It's just that when you would want to start a company, you will know when you are ready to do it. When you are not, you'll probably ask dumb questions about it. So when you're not sure of it, might as well get a job, build these characters meanwhile. And as soon as you get an idea, you'll probably have those characters ready to build to give your idea the support it needs and start your business. Why do you think graduates from IITs and IIMs in this country start their businesses a lot earlier, especially after they graduate? Why? Because of the networks. Because I'm a network. Because of एक तो reason है मतलब means बहुत लोगों का that is a reason. The network helps them with other things, but it's more about the lifestyle and the routine and the values they learn in these institutions in these 3-4 years. They learn they learn the values of work ethic, they learn the value of getting shit done at the right time, the professionalism they needed, the routine and the discipline needed to run a business or be an employee. These things are very much instilled in them in 3-4 years, क्योंकि जिस हिसाब से project और काम होते हैं इन सब का मूलिंड वगैरह जो भी मतलब the way of things that they handle and the way at which they handle. Networks help you gain funds, find employees, build a better team, come up with better ideas, but it won't help you be a better man until the network is a part of a system itself. Now their networks are a part of the system itself, which is a lot more work ethic driven, a lot more intellectual, a lot more IQ driven, a lot more discipline driven. So you can't really do those things. अब जब आप 4 साल में इतनी मतलब when you go through such a process, such an extensive process in these 4 years, you don't have to worry about a lot of these things in future, because these things are sorted in you. Just because you're not talking stocks does not mean you're not investing. Like half of the guys you would meet in general who are actually very good traders, they don't keep talking about fucking stocks all the time. This is the stupidest wannabes you can see across. Just keep talking about how many guys have you seen or have you not noticed? They keep talking about Bitcoin and stocks and shares and have not invested jack fucking shit in their life. बहुत कम ऐसा इतना ज़्यादा नहीं देखते इजीली. मतलब इतना ज़्यादा लोग मीन्स कोई ऐसा ओपन नहीं मतलब स्टॉक्स रिगार्डिंग फाइनेंस रिगार्डिंग कोई भी बोलते तो ओपन अब इतना इजीली कोई होता नहीं. टाइम लगता है उन लोग जो कोर नहीं मतलब जो इन how many guys have you noticed who talk about stocks and Bitcoin and things and have not invested anything yet? They just talk is what I meant. You heard it the ulta way.
I have seen a lot of guys who talk about stocks and investments a lot, but they have not invested jack shit. They like to be aware, they like to talk, but what's the point? It's like you're talking about fitness, but you're a lazy fuck, you're a fat fuck. What the fuck? So if you want to talk about stocks, and if that's a part of your job, and if I seek your advice or whatever, yeah, sure, give me it. But if you're just trying to show off, I'm a fitness, I'll keep talking about fitness either because fitness is my job and I like to, because I'm really, really passionate about it, or because you asked me something and I'll probably talk about fitness in that context. If not, why the fuck would I be talking about abs and six-pack abs and fucking doing crunches all the time? I recently went out with my very good friend, very old friend, Pranav. He was even on podcast. We did a few podcasts. So I went out with him. There were 5 of his friends. All were fucking trainers. They're all very elite trainers. Very fit guys. They all probably have six-pack abs. There were 2 girls even. They would have had six-pack abs. I never heard them once talk about fitness. Once. And that's their fucking job. Not once. You could not... I mean, sure, you'll meet fitter people, but that's their profession. They are very fit for their life because that's their life. They spoke about, they had a debate about a particular topic of hypermeiosis or some hypertrophic, some thesis. I didn't even know that. But these 4 guys debated on it for a bit and then it was out of it in 10 minutes. We were talking everything else besides fitness. Does it mean that these guys don't invest in stock or they don't have a house? Dude, they are killing it. Okay, they have bigger, better cars than what I do. But this is good for everyone in this country who is not coming from a very West-centric content or who has not been to IITs, IIMs, who are lazy, complacent fucks. At least this can put them on track. And quick money जो मैं बोल रहा था ना, quick money नहीं, but big money at least use बहुत time देने का, efforts देने के बाद ही मिलना है. Hard work जो बोलते हैं इतना easily मिलने नहीं वाला है. Easy. Not just trading, means investing में भी नहीं, trading में भी नहीं, बहुत concepts. If the money comes quick, it goes quick too. Yeah. How many guys have you seen, TikTok influencers and all that, guys who are 18-year-old, made boatloads of money and don't know what the fuck to do with the money? They do something stupid or it just blows out. If everything, I believe, this is not, it could be right or wrong, but everything happens when it is supposed to happen. It happens for good and right time. If you are not capable enough to make $1 million, I don't think you should make $1 million at 16 years of age. You'll probably blow up or you'll probably do cocaine and other sorts of drugs. क्योंकि पैसा क्या करोगे तुम? 2 गाड़ी खरीदोगे फिर क्या करोगे? गाड़ी जाके ठोक दोगे, मर जाओगे. It's not an extreme thing. बट यार 18-20 साल में अगर तुम 1200 सीसी का बाइक ले लोगे तो तुम कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठोगे. I'm not saying you're stupid enough to do it. That's just the very sense of a human life, a human being. So things happen for a reason at the right time, at the right age. If you want to be a millionaire and if you want to keep your millions, there'll be a point in time when you'll make that million and you'll probably be making it for the right reasons and you'll keep it for smart reasons. So you want to make quick money and then it blows out or you end up blowing yourself up with it. So yeah, time and money, but it's just everything, not just money, but even fitness or whatever that there is. You put in the effort, you'll probably be fit when you're 30-40 years old too. You want to be quickly fit, go do steroids and then what? Right? So side effects सबका है. Probably fucking get a heart attack and die. खत्म हो गया तुम्हारी 6-pack लेके मर जाओगे तुम वैसे अपनी पंप वाली. So what's the point of it, right? Same thing with quick money and all. Anything quick. I don't know why people become so impatient with fucking life. तुम काम करो ना, तुम अपना 12 घंटा 10 घंटा दो. Do it in a way that you are putting in the work and you're learning from the work and you're improving your work. Money will fucking come, fitness will come, whatever you want in life will come. But okay, this post again, because this is very interesting in many ways. इसमें लिखा है, if you are 25 to 30 years old and your main circle frequently talks about जो भी मैंने बोला, isn't frequently discussing about, is not frequently, and instead they're discussing getting high and drunk, one night stands, the good old days. Then it's time to elevate your circle, right? Abhi this is why I told you this is very important for at least the most of the Indian audiences, because यहाँ पे the complacent fucks will be doing this a lot more. ये कुछ और करे ना करे, ये they'll not talk about one night stands क्योंकि यहाँ पे वो concept ही नहीं है. This is how Western it is. They're talking about one night stands. So this is still very foreign to Indian masses, but they'll talk about women a lot. They'll talk about relationships. They'll talk about not women. They'll discuss women in a way that, oh, do you see that chick in college or whatever? Do you see that girl or whatever? In that case, they'll probably never go talk to her. They'll never do any proactive things about it.
and they'll get high. This is very West. Nobody talks here about getting high and drunk. They probably talk about going out and partying and shit like that. But people who are getting high and drunk, they're just doing it. They're talking about it. Good old days. Anyway, so yeah, this is good for people who are in this country, coming from middle class families whose parents have survived and done good, and now these fuckers have become lazy fucks. Middle class privileged guys who are not from the underprivileged background, who have taken their life a little too fucking easy and who have become a little too soft, especially in this country where they lack work ethic, they lack discipline, they lack character, they lack morals. They just want to do nothing. वो ना ये कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं. They fantasize women. They probably get drunk at the house or whatever. And they never had a life, so they will never talk about good old days. They're just lazy fucks. So, ये तो दूर की बात है. So this is important for them. I'm not going to hate on them. But for everyone else, at least for anyone who's watching us from the other countries or all you American Indians and Angrez Indians, no, this is not for you. Don't get into your head about. Then this is not life. This work and you were, what was that? You were asking this question only, right? What was that thing that you asked? Extreme work creating कुछ बोल रहा था शायद. People who are already working hard, they don't need to be pushed enough to work harder. That's when you burn out and you go absolute crazy. This is for people who have not worked hard or have not even tasted work ethic or genuine passion towards something ever. If you are a hardworking guy, you'll probably not even be looking at or getting affected by these things because you're doing your shit, you know your shit. If you're an insecure little man, or if you're insecure of your capabilities, or if you're just unaware and unhappy about your capabilities, and if you're a little too greedy, then these things can get into your head. But at least you'll be working for it. So this is not for anyone who has his shit in place. This is for everyone who never really thought they should even focus on getting their shit together in place. Work is not bad. We all love our work. But if you are 25 to 30 and your main circle isn't frequently, these guys are lunatics. I don't want to hang with them. इनसे बड़े बोरिंग इंसान कोई नहीं होने वाला जो दिन रात बस स्टॉक्स की, रियल एस्टेट की, बिजनेसेस की. शायद मैं भी एक पागल ही हूँ. आई टॉक अबाउट बिजनेसेस अ लॉट, बट committed relations, what the fuck, are you kidding me? Fitness, I don't know, this is kind of, I'll find them very boring. I get it, but I'll find them very boring. So yeah, there's so much more to life, but that's my problem. I have, since मैंने कुछ किया नहीं है besides ये तीसरा point, opening new businesses, तो मेरे life में और कोई I don't have, all of them is just kind of stupid to just conclude life on. There has to be a balance. But yeah, I think that was it. Yeah, that's all about the lost balance जो हम चाह रहे हैं हमारी ज़िंदगी में. इसको तो टाइम है भाई, मेरी तो उम्र हो रही है. But Ayush is doing well. This is good. I hope आप सबको पसंद आया होगा. ये अजीब सा सुबह से शाम हो गया पॉडकास्ट में भाई, 2 बार तो 2 घंटा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ इसमें. बट आई होप दिस मेक सेंस. इफ़ यू वुड वांट अस टू मेक मोर ऑफ दिस, आयुष को DM करो आपके क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स which we can sit and talk and make in-depth video podcasts like this about. और कुछ you want to add, Ayush? That I missed. बहुत तो कुछ ऐड नहीं करना था. ये यूजफुल लगा, मतलब ये जो लास्ट पॉइंट था कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया मैं, मतलब अंदर थोड़ा ज़्यादा ही इरिटेट जैसा हो रहा है. As in about what? Like which point? What was you saying? Means the screenshot. ये screenshot देख के. Yeah, because aggression अंदर से. Because people misread these things. As in they say कि भाई यही जिंदगी है इसके अलावा. And this is very West in a way. This is very American in a way कि उनका सेल्फ वर्थ है उनका पैसा और उनके काम से रिलेटेड है यार. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका काम और आपका पैसा, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी पूरी लाइफ, आपकी आइडेंटिटी नहीं डिफाइन कर सकती. आप मर्सिडीज में घूम रहे हो तभी उसका मतलब भी आप सक्सेसफुल हो ज़रूरी थोड़ी. इसके हमारे 6 महीने पहले तो हम ऑफिस में नहीं थे. वी हैड एन ऑफिस इन 2019 pre-COVID. But then we had been working from home. Did that make us any less successful? No. Hell, we think even more stupid now by taking the office. खर्चे बढ़ गए हमारे, but it's just part of life. If you keep doing things, it'll grow. It'll become wherever, however it is. ये obsession क्या है? Obsession about one night stands, obsession about fitness, business, किसी भी चीज़ का obsession क्या है? Why can't there be a balance of all? Why can't you simply go out and maybe probably get drunk once in 2 months? How is that bad? हम भी जाते हैं बाहर. मतलब इसका मतलब तो ये नहीं कि I'm telling everyone to get drunk. Why do you have to go to that extreme end? Why can't you just go out and have a couple of drinks?
Why do you have to go to the extreme and then try to be Jeff Bezos? Why can't you just have a business and employ 10 people and make their life better? You know, आपके करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ के चक्कर में मतलब you feel that there is nothing sane in, there's nothing good in between, there is nothing good in being modest, there's nothing good in living a happy fulfilling life. What are you trying to chase in that context? You are getting obsessive over this, going out, getting drunk, one night stands, good old days, or you're obsessing over stocks, real estate, businesses. Why obsess over anything? This is a better obsession, not denying. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी है, आप सबके लिए ज़रूरी है, बट मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं, मतलब दिस कैन बिकम अ लिटिल टू मच. जो मैं बोल रहा हूँ आई हैड अ पिस्ट ऑफ फेथ वाज फॉर देम हु टेक इट अ लिटिल टू एक्सट्रीम, कि उनके लाइफ में पहले से उनका स्टॉक, रियल एस्टेट और बिजनेसेस शॉर्ट हैं, वो फिर भी और एक्सट्रीम करेंगे चीज़ें क्योंकि सोसाइटी ने या फिर उन्होंने खुद को ऐसा ज्ञान बना दिया कि भाई आई हैव टू टेक थिंग्स एक्सट्रीम. So then that extreme can lead from businesses to women also. That extreme can go in different directions. They are never really fucking balanced. The balance important है हर चीज़ में, मतलब एकदम extreme side पे नहीं रहना चाहिए. It's a very, अभी तो बहुत ही mainstream चीज़ हो गया ना बोलना balance, but balance क्या है, मतलब it's just like एक्सट्रीम एंड पे मत रहो ऐसा. हाँ मतलब एकदम लेजी लथार्जिक नहीं रहो, लेकिन लेजी लथार्जिक का ऑपोजिट हो गया एक्सट्रीमली ओवरली एग्जॉस्टेड एंड सुपर बॉर्डरलाइन बर्नआउट्स ऑल द टाइम. वैसा भी मत रहो, फिर तुम नेवर बी एबल टू सस्टेन ईदर. लेजी लथार्जिक में तो आपके पास है ही नहीं कुछ, आप मर जाओगे ऐसे बैठे बैठे क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग टू फकिंग डू इन योर लाइफ, और यू डोंट हैव मीन्स टू पे योर बिल्स, और एल्स यू विल जस्ट ओवरवर्क योरसेल्फ टू डेथ. वेयर द फक इज द बैलेंस? वेयर डू यू गेट टू लिव लाइफ अ हैप्पियर वे? In a way that you love your job, you love the way you do your job, you love to talk about business, you love to talk about stocks, you love to talk about going out too, you love to talk about a certain mind too, you love to talk about a champagne too, you love to talk about your relationships too, you love to talk about other things too, you love to talk about friendships too. Why the fuck would you want to hang out with a friend who does not talk about friendships, who does not talk about social connections, who does not talk about anything else besides stocks, real estate, fitness? अरे पागल है क्या बंदा? So my problem is with extreme obsessiveness over anything. Don't be extremely obsessed with laziness or the playboy lifestyle, and don't be extremely obsessive with being the wannabe Instagram entrepreneur lifestyle. ये साले अमेरिकी थोड़ा जो होते हैं wannabe साले इन सब चीज़ों में extreme end के wannabe. So don't be that. Anyway, हो गया, भूख लगी मुझे, चलो. अगर आपको पसंद आएगा ये वीडियो तो भाई, अगर आपको पसंद आया ये वीडियो पॉडकास्ट तो let us know. थोड़ा इम्प्रूव करेंगे. विल प्रॉब्ली ट्राई टू गेट दी एको सॉर्टेड एंड गेट बेटर लाइटिंग्स. अभी तो एक लाइट पर चल रही है काम, अंधेरा हो गया भाई ये तो. ठीक है, एनीवे थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, वाचिंग अस. पता नहीं इसका ऑडियो फॉर्म कब जाएगा, क्या होगा, पहले वीडियो पॉस्ट के साथ चल जाएगा. एंड ऑन दैट नोट वील सी यू इन द नेक्स्ट वन. बॉज एंड शूज टीम बी बेसिक्स. एंड इन केस ऑफ एनीथिंग एल्स यू कैन DM us on Bos and Shoes or Team B Basics or Team B Evolve, or if you have questions and ideas DM Ayush जैसा. मिलता हूँ अगले में. Thank you Ayush for being here. Thank you for being the co-host. If you have to add anything, add it, or else we'll cut it off. यार यही इनफ था. इसमें बहुत ऐसा सीखने मिला. ये जो जैसा लगता था कभी कभी ये इम्पोर्टेंट है करके, बस वही जानने का था. तो इम्पोर्टेंट जरूर है, बहुत है, लेकिन तेरे लिए नहीं है क्योंकि तू करता है ये सब चीज़. नहीं कि तू बेकार निठल्ला नहीं बैठा रहता. This is not, I have a problem with you following this. I don't have any problem with anyone else following this. You don't belong to, you're on the extreme end. Don't like that. Chalo, bye, good night. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're doing our